गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स एंड वेलकम अगेन टू पारिजात सर क्लासेस। एक बार और आपका स्वागत है टू अनदर सेशन ऑफ फिज़िक्स क्लास 12। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वी आर ऑलरेडी कंटिन्यूइंग द क्लासेस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फिज़िक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका जो थर्ड पार्ट है दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। आज जो हम क्लास करेंगे दैट इज़ the electrostatic potential. Already we have discussed Coulomb's law. उसके बाद हम लोग ने already we have discussed the theory and the numericals of the electric field जो already मैंने दे दिया है. So today is the third class of the electrostatics which is electrostatic potential. तो आज इस चैप्टर को हम लोग पूरा डिटेल्स में देखेंगे and I will cover up the whole portion of the theory in it. इससे क्या होगा, कोई भी आपको अलग से नोट्स बनाने का ज़रूरत नहीं है। आप मेरे नोट्स को अच्छे से देखिए, आप मेरे वीडियो को अच्छे से समझिए। आप इसमें जितने भी टाइप ऑफ डेरिवेशंस हैं, जितने भी टाइप ऑफ पार्ट्स हैं जिसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं बोर्ड्स में, एवरीथिंग इज़ कवर्ड हेयर, एवरीथिंग इज़ एक्सप्लेन्ड इन डिटेल्स इंक्लूडिंग द न्यूमेरिकल्स। मैं बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स करूँगा इस चैप्टर के अंदर। सो प्लीज़ कीप फॉलोइंग माई वीडियो एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड तक देखिए, बिकॉज हर वीडियो को अगर एंड तक देखेंगे तो आपको पूरा चैप्टर समझ में आएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और स्टार्ट करने से पहले जैसे मैं आपको हर क्लास में मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एज पारिजात सर क्लासेस। उनके वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए, सो दैट आई कैन कंटिन्यू मेकिंग मोर एंड मोर वीडियोस फॉर यू। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो थर्ड चैप्टर है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर से। सो टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट is the electric potential। जैसा आप देख रहे हैं कि it is written here, it is electrostatic potential energy. This is what we are going to start today. ठीक है, तो first of all what I want to discuss with you is, suppose what is the electrostatic potential energy of a charge Q? Electrostatic potential energy of a charge Q क्या होता है? See, it is the work done to bring a charge Q by an external force in an electrostatic field from infinity to that point without acceleration। ये important word है, without acceleration ये important word है, विदाउट एक्सेलरेशन। तो अगर आप एक चार्ज को इन्फिनिटी से, सपोज इस चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लेके आए हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इस पॉइंट पे लेके आए हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो अगर आप एक चार्ज को इन्फिनिटी से एक पॉइंट पे लेके आए हैं इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड माइंड इट बाय यूजिंग सम एक्सटर्नल फोर्स, आप इसको लेके आ रहे हैं, बट विदाउट एक्सेलरेशन नहीं आपको करना होगा। विदाउट एक्सेलरेशन यू कैनॉट डू एनी एक्सेलरेशन while bringing the charge Q from infinity to that point in the electric field। जो भी वर्क डन आपको करना पड़ेगा that is the electrostatic potential energy। ठीक है, चलिए, so let us now think about, so I hope this is clear। इसको मिटा देते हैं because space is very less, इसको मिटा देते हैं and now let us think with the next part। तो नेक्स्ट पार्ट हमको क्या बता रहा है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। वी आर डीलिंग विथ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो सपोज इन्फिनिटी से, ये रहा इन्फिनिटी, और इस इन्फिनिटी से
आपने एक चार्ज को फर्स्ट यू ब्रॉट इट टिल ए, फर्स्ट यू ब्रॉट इट टिल ए, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ा, यू हैव ब्रॉट इट फ्रॉम इन्फिनिटी अप टू ए, और जब आप आए तो इसमें पोटेंशियल जो लगा, सपोज इट इज वी ए, और जब आप यहाँ से यहाँ पे आए, फ्रॉम इन्फिनिटी यू केम टू बी, तो इसमें आपका पोटेंशियल सपोज करिए वी बी, यहाँ पे पोटेंशियल वी बी। तो अगर आपको ये चार्ज ए एंड बी में लाना है, whose potential difference is VA minus VB, whose potential difference is VA minus VB, तो याद रखिए the potential, what is the potential difference? It is the amount of work done। ये देखिए amount of work done, potential difference क्या हो गया? It is the amount of work done by the charge which you are bringing। amount of work done मतलब यहाँ पोटेंशियल है ए वी ए, यहाँ पोटेंशियल है वी बी, सो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? द पोटेंशियल डिफरेंस इज वी ए माइनस वी बी, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? इट इज द अमाउंट ऑफ द वर्क डन टू कैरी द चार्ज, एक बार ए एक बार बी, तो टोटल वर्क डन इज डब्ल्यू ए बी डिवाइडेड बाई द चार्ज। ये हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस। एंड एसआई यूनिट क्या है? वोल्ट्स। एसआई यूनिट इज वोल्ट्स। याद रखिए पोटेंशियल डिफरेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल डिफरेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा, इट हैज गॉट ओनली मैग्नीट्यूड, इट हैज गॉट ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है। सो नेक्स्ट व्हाट वी आर स्टडीइंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स कंजर्वेटिव का मतलब है कि आप एक चार्ज को जिनमें पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी हो, इन दोनों पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? वी ए माइनस वी बी हो, आपने इस चार्ज को यहाँ से इस पाथ से लिया, या फिर इस पाथ से लिया, या फिर इस पाथ से लिया, और यू आर गोइंग अलोंग दिस पाथ, it does not make any difference, work done from A to B is important and nothing else। the path is not important, it does not depend upon the path। किस path से आप आए हैं इस पे डिपेंड नहीं करेगा, it will only depend upon the potential difference into the charge। तो work done क्या होगा? the work done, mind it, if you are doing any work done, आपको खाली दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है and multiply with the charge, that's it। so it does not depend upon which way you are taking from A to B, which way। so इसीलिए बोलते हैं कि it is a conservative field, electrostatic field is a conservative field। next देखिए क्या है, no work is done in moving a test charge, positive charge over a closed path in an electric field। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले you are going from A to B along this path, suppose you went along this path, so you have done this much of work done, और अब आप जो है B to A आ रहे हैं, B to A, that means see it is a closed path। पहले आप ऐसे गए, first you went like this, and now you are going like this, and now you are going like that, means it's a closed path। so याद रखिए कि if you move over a closed path you will do no work, electric field along a closed path is always zero। तो इसका मतलब क्या है? this is a closed path। तो राइट, तो अंडरस्टैंड वन थिंग, दिस इज द वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? वर्क डन इज ई इंटू डी एल, ई इंटू डी एल इज द वर्क डन एंड दैट शुड बी ज़ीरो। देखिए हमने ऑलरेडी पढ़ा था
कि E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dV बाई dl, ये हमने पढ़ा था. सो हियर व्हाट वी विल ऑल माने अगेन स्टडी, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस. यहाँ से क्या मिल रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस इज E इंटू डी एल, E इंटू डी एल, राइट. दिस इज ऑल्सो पोटेंशियल डिफरेंस. तो इसीलिए देखिए इस वर्क डन के बदले हम लोग क्या लिख रहे हैं? इस वर्क डन के बदले हम लोग क्या लिख रहे हैं? वर्क डन along A to B and B to A will be what? The total closed path के अंदर E dot dl. तो हमारा अगर closed path हो तो the total work done it will be 0. याद रखिए it will be 0. Okay. So next we are doing electrostatic potential due to a point charge. अब हम लोग निकालने चाहते हैं, we want to find out कि देखिए इस पॉइंट चार्ज के लिए इस पॉइंट में विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ r, ये प्लस q चार्ज के लिए एट ए पॉइंट p विच इज एट ए डिस्टेंस r, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? दैट इज आर टारगेट, दैट इज आर टारगेट. ओके. तो सपोज हम लोग क्या करते हैं कि एट ए डिस्टेंस ऑफ x, सपोज हम लोग क्या करते हैं, हाउ विल आई डू दैट सम, डू दिस डेरिवेशन, ये पहले आप समझ लीजिए. फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि एक चार्ज है, दिस इज सी, द चार्ज इज केप्ट प्लस क्यू एट ओ. हमें पता करना है एट द पॉइंट P व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, मतलब V. ये मुझे निकालना है VP ड्यू टू द पॉइंट चार्ज. इस पॉइंट चार्ज के लिए P पे पोटेंशियल क्या है ये मुझे निकालना है. तो लेट्स सी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, अगर आप इस फिगर को देखेंगे, दिस वाज आवर फिगर. तो लेट अस गो टू द फिगर फर्स्ट. देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, लेट मी first see. Okay, so this is our figure. Let us first clear out some parts so that आपको थोड़ा सा easy लगे. Okay, let me first make some space for me. Let me make some space for me so that you can understand. Okay, तो चलिए अब मैं आपको दिखा रहा हूँ. So here what I want to show you इज इस पॉजिटिव चार्ज के लिए यहां मेरा पोटेंशियल क्या है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल फाइंड आउट व्हाट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ x. यहां मेरा एट ए डिस्टेंस ऑफ x, इफ आई कीप अ 1 माइक्रोकोलम पॉजिटिव चार्ज, अ 1 माइक्रोकोलम पॉजिटिव चार्ज, तो यहां फोर्स क्या होगा? यहां फोर्स क्या होगा? सो द फोर्स ऑन A ड्यू टू प्लस Q. देखिए एक है Q, एक है 1, एक है Q, एक है 1. सो द फोर्स एट ए डिस्टेंस ऑफ x, ये ऐसे दिया जाता है यूजिंग Coulomb's लॉ, एंड इट इज एक्टिंग फ्रॉम O टू A. दिस इज OA एज इस डायरेक्शन में है. नाउ वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? F बाई Q. तो दिस डिवाइडेड बाई Q, तो Q कट जाएगा. सो द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इज अलोंग OA. तो अगर आप देखें यहाँ पे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ, ये A है, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द E एट A. ये रहा आपका A, दिस इज आर A. तो यहाँ पे फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वी फाउंड आउट. नेक्स्ट देखिए क्या है. इफ आई मूव दिस 1 Coulomb चार्ज थोड़ा सा बाय अ डिस्टेंस dx, देखिए वी आर मूविंग अगेंस्ट द फोर्स. सो हमको वर्क डन क्या करना पड़ेगा? सो व्हाट इज द वर्क डन? तो देखिए दिस इज द वर्क डन, dw इक्वल टू f डॉट dx, एंड इट इज अगेंस्ट, इसीलिए नेगेटिव साइन आया है. सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, फोर्स into dx. So this is the force into dx is my work done. Okay,
सो नेगेटिव साइन ये क्यों आया? नेगेटिव साइन इट हैज कम बिकॉज वी आर मूविंग अगेंस्ट द फोर्स. फोर्स ऐसे था एंड वी आर मूविंग dx ऐसे जा रहे हैं. सो वर्क डन इज नेगेटिव. सो व्हाट इज द वर्क डन इफ आई मूव द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी? देखिए फ्रॉम इन्फिनिटी, इफ आई मूव द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, यहाँ पे अगर मूव करेंगे सो व्हाट इज माई वर्क डन? तो वर्क डन देखिए फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, मेरा वर्क डन माइनस ई डॉट डी एक्स एंड दिस इज द वर्क डन. ठीक है, दिस इज द वर्क डन. ये मैंने ऑलरेडी लिखा था, वर्क डन इज दिस. सो दिस इज द वर्क डन हेयर. सो q by 4 pi epsilon is a constant, वो बाहर चला गया. इंटीग्रेशन ऑफ x to the power minus 2 which is minus x to the 1 by x which is minus 1 by x. तो एक बार हम लोग पहले r बैठाएंगे x में और एक बार इन्फिनिटी बैठाएंगे. सो दिस इज C1, एक बार r बैठाया और एक बार इन्फिनिटी बैठाया. सो 1 by infinity is 0, so basically it is minus 1 by r और बाहर एक माइनस है. So this is the work done. This is the work done to carry a unit positive charge, to carry a unit positive charge from infinity up to a point r. मतलब यहाँ पे एक चार्ज है और मैं चाहता हूँ कि इन्फिनिटी से अप टू द पॉइंट r, अप टू द पॉइंट p मैं 1 माइक्रो कूलम को मूव करूँगा. दिस इज द चार्ज q. मैं चाहता हूँ इन्फिनिटी से अप टू द पॉइंट P एक 1 माइक्रो कूलम को मूव करा के लाऊं. तो व्हाट इज द वर्क डन? दिस इज द वर्क डन q by 4 pi epsilon o r, राइट. एंड वर्क डन अगर ये है तो व्हाट इज द पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल? व्हाट इज द पोटेंशियल? तो पोटेंशियल ऑलरेडी वी हैव डन. ये रहा पोटेंशियल, देखिए तो पोटेंशियल ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड. ये रहा पोटेंशियल. तो पोटेंशियल इज द वर्क डन बाय द चार्ज, पोटेंशियल इज द वर्क डन बाय द चार्ज. तो यहाँ क्या होगा? इफ पोटेंशियल इज द वर्क डन बाय द चार्ज, तो देखिए दिस इज माय पोटेंशियल, तो वर्क डन बाय द चार्ज. सो दिस इज, सो वर्क डन देखिए, सो पोटेंशियल इज द वर्क डन. कितना वर्क डन है? q by 4 pi epsilon o r and divided by the charge. So charge कितना था मेरा? 1 माइक्रो कूलम. चार्ज था 1 माइक्रो कूलम and that is why this has come. So this is the potential at a distance of r. मतलब अगर कोई चार्ज प्लस q है, so at a distance of r from it, यहाँ पे potential will be how much? It is q by 4 pi epsilon o r in vacuum. Obviously this is in vacuum. So see here, अगर ये चार्ज पॉजिटिव है so it will be plus q, और अगर नेगेटिव है तो it will be minus q. That means the potential is depending on the nature of the charge. Potential is depending on the nature of the charge. अच्छा, at infinity, अगर r infinity है तो we know that 1 by r, 1 by infinity क्या होता है? 0. So see 1 by infinity 0 हो जाएगा, 1 by infinity 0. That means potential at infinite distance is taken as 0. Potential at infinite distance is taken as 0. So now see, if I want to draw, so already we have seen तो potential कैसे वैरी कर रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज वैरिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर. तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल को प्लॉट करूं एट ए डिस्टेंस, एज ए डिस्टेंस ऑफ r, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी कमिंग डाउन वेरी शार्पली कंपेयर टू द पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक फील्ड जो है it will come down very sharply compared to the potential because it is 1 by r square. Clear? So this is the thing, right? Okay friends, so let's see the next part. एक बार हम लोग देख लेते हैं.
So what we are going to see now, already we have discussed how the electric field is varying. चलिए, so next part, potential at a point due to a group of charges. तो देखिए, group of charges as I told you that अगर आपका यहाँ पे सपोज करिए, अगर आपका यहाँ पे प्लस Q चार्ज है at a distance of R1, this is minus Q, this is Q1, this is Q2 at a distance of R2, this is Q3 plus Q3 at a distance of R3. तो मतलब टोटल पोटेंशियल जो होगा दैट इज 1/4πε0, ये तो कॉमन है, समेशन ऑफ, आप क्या करेंगे, Q1 पॉजिटिव है तो प्लस माइनस Q2 प्लस Q3, ऐसे करते जाइए अप टू द लास्ट चार्ज, अप टू द लास्ट चार्ज. सो दैट विल गिव यू द टोटल पोटेंशियल एट ए पॉइंट P ड्यू टू ऑल द चार्जेस. ओके, सो यहीं पे ये देखिए, वहाँ पे ये लिखा हुआ है टोटल पोटेंशियल, यहाँ पे दिस विल बी R1, सॉरी ये R1, R2, R3, Rn, बिकॉज डिस्टेंस भी वेरी कर रहा है. सो दिस इज द नेट पोटेंशियल विच इज फाउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ P ड्यू टू ऑल द चार्जेस. ठीक है, सो लेट अस नाउ डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे because this is very much used in the numerical portion. So let's see. Okay, so what we are going to see, that is electric potential due to a dipole. Electric potential due to a dipole. तो देखिए dipole क्या है, एक है this is a positive charge. I told you dipole is a equal and opposite charges separated by a distance. तो ये रहा distance between the charges, that is 2a. And suppose, so this is dipole moment, it is from the negative charge to the positive charge. So from a center of the dipole, from the center of the dipole at a point P, I want to find out what is the electric potential here. यहाँ electric potential क्या है, we want to find out that. So first of all, suppose the minus Q charge is at a distance R1, the plus Q charge is at a distance of R2 and the center is at a distance of R. तो देखिए, so due to minus Q क्या होगा, potential at A will be this, due to plus Q the potential will be this, so net potential is this. तो यहाँ पे देखिए, if this is the net potential, तो यहाँ पे remember it, we don't have any, this is the net potential due to the two charges. Now if you are keeping a dipole, if you are keeping a dipole, इसका derivation आपको नहीं चाहिए, just remember it. If you are keeping a dipole, it is P cos theta by 4πε0 r square. ये P क्या है, P is the dipole moment. P क्या है, P is the dipole moment which is charge into the distance between them. ये dipole moment है. So if you are keeping a dipole, if you are keeping a dipole, then what is the potential at this point? It is P cos theta by 4πε0 r, and theta is the angle between the center of the line joining and the dipole का जो distance है, right? This is the angle theta. Now see, if theta is 0 degree, मतलब you are finding the potential at this point, ये एंगल 0 डिग्री हो जाएगा. यू आर फाइंडिंग द पोटेंशियल अलोंग दिस पॉइंट, और 180 डिग्री यू आर फाइंडिंग द पोटेंशियल हेयर, ऐसे करके यहाँ पे P होगा, यहाँ पे P. सो द एंगल बिकम्स 180 डिग्री. सो आइदर यू आर फाइंडिंग ऑन दिस साइड, सो आइदर यू आर फाइंडिंग ऑन दिस साइड, इधर निकाल रहे हैं P where the theta is 0 degree, and here where the theta is 180 degree. So यहाँ पे अगर हम पुट कर दें, if theta is 0 degree, then the potential comes P by 4πε0 r square, and if the theta is 180 degree, so we'll find the potential as minus P by 4πε0 r square.
Clear? Second case, if the point P lies along equatorial plane, that means अगर P यहाँ पे है, if the point P is here, so definitely theta is 90 degree, theta 90 degree, and cos 90 क्या होता है? Cos 90 is 0. So the potential along the equatorial plane of a dipole is 0. याद रखिए इसको, potential along an equatorial plane is 0, and potential along the axis, either it is P by 4 pi epsilon o r if theta is 0 degree, और अगर 180 degree हो, so it is minus P by 4 pi epsilon o r depending upon the angle, right? Next is इक्विपोटेंशियल सरफेसेस. देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या मतलब होता है कि जब दोनों का पोटेंशियल, सपोज देयर आर 2 पॉइंट्स A and B, so here the potential is VA and here the potential is VB, and they are equipotential, that means VA is equal to VB. So what is the potential difference? The potential difference is 0, and if the potential difference is 0, the work done will be 0, because work done, what is the work done by charge was the potential difference, VA minus VB. So if the potential difference is 0, the work done will be 0. That means no work is done in carrying a charge along इक्विपोटेंशियल सरफेस. मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस में अगर आप किसी चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाएंगे, सो द वर्क डन विल बी 0, राइट? सेकेंड सी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, dw इक्वल टू E डॉट dl. वी हैव ऑलरेडी डन. पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे रिमूव कर दूं. सो वी हैव ऑलरेडी सीन दिस. We have already seen this link, that is along a closed surface E dot dl is 0 and work done is E dot dl. ये हमने देखा है, right? Now here what is a dot product? That means हम लोग क्या लिखेंगे? dw E dl cos theta, E dl cos theta. ये cos theta क्या है? It is the angle between the length dl and the direction of the electric field. This is the angle. तो work done ये है. Now see, इक्विपोटेंशियल सरफेस में क्या होता है? वर्क डन इज 0. इक्विपोटेंशियल सरफेस वर्क डन इज 0. सो ई डी एल कॉस थीटा इज 0, राइट? सो ई कैनॉट बी 0, डी एल कैनॉट बी 0, दैट मीन्स कॉस थीटा इज 0. और अगर कॉस थीटा 0 होता है, सो थीटा इज 90 डिग्री. दैट मीन्स द ई इज परपेंडिकुलर टू डी एल. इसका मतलब क्या है? इट मीन्स दैट अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस आप लेते हैं, if you take an equipotential surface, तो we know that work done is already 0. If you take equipotential surface, उसमें work done क्या होता है? 0. So remember it. अगर suppose this is the equipotential surface A B, that means there is no potential difference between A and B. तो याद रखिए इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, the electric field is perpendicular to the surface. Electric field is perpendicular to the equipotential surface, right? So in an equipotential surface, electric field is perpendicular to the surface. Clear? चलिए next हम लोग देखते हैं. Okay friends, चलिए, so next let us see, the next topic says that we want to see how does equipotential surfaces they look. We want to find out how equipotential surface look. Okay, equipotential surfaces कैसे देखने हैं? For a point charge, you see
दिस इज अ पॉइंट चार्ज, इस पॉइंट चार्ज का देखिए पॉजिटिव चार्ज है, सो इट इज गोइंग आउट, इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर ऑल गोइंग आउट। एंड प्लीज रिमेंबर वन थिंग, मैंने आपको कहा था इफ इट्स अ नेगेटिव चार्ज इट विल गो इन। मैंने आपको कहा था कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², मतलब जितना चार्ज के क्लोज रहेंगे द लाइन्स विल बी वेरी क्लोज, और जितना लाइन्स चार्ज से दूर जाएंगे लाइन्स विल बी फार अपार्ट। सेकेंड इज अ पैरेलल प्लेन, तो पैरेलल प्लेन में देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे देखने में होते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर पैरेलल, इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर पैरेलल। नाउ फॉर अ डाइपोल देखिए ये माइनस चार्ज है and this is a positive charge, so this is a dipole, okay। so dipole में देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिखता है, and for equal charges this is a positive charge equal, positive charge equal। तो देखिए अगर डाइपोल होगा तो ऐसा दिखेगा, and if it's a electric charge having there are two charges which are equal, तो देखिए कैसे दिखेगा। so this is, you should have an idea about how equipotential surfaces for different types they look। next, relation between electric intensity मतलब E and electric potential मतलब dV। so this is the relation between electric field and the equipotential and the potential difference, electric field and the potential difference। तो यहाँ एक चीज मैं आपको दिखाऊं which is E इक्वल टू माइनस dV/dr, ये आपको माइनस दिख रहा है, दिस इज द माइनस। तो नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, मीन्स नेगेटिव साइन का मतलब है कि वेयर द पोटेंशियल डिक्रीजेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर, इलेक्ट्रिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिधर डिक्रीज करेगा, पोटेंशियल जिधर डिक्रीज करेगा, अगर पोटेंशियल इधर डिक्रीज कर रहा है सो इलेक्ट्रिक फील्ड्स का डायरेक्शन विल बी इन दैट डायरेक्शन, दैट इज वाई ये नेगेटिव साइन आया है, राइट। एंड माइनस dV/dr याद रखिए, दिस इज कॉल्ड द पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो यहां से हम क्या देख सकते हैं कि E जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/dr है, मतलब जितना डिस्टेंस घटेगा, जितना डिस्टेंस जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू उतना, जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, राइट। इट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, आपका डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, राइट। ग्रेडियंट मतलब जितना आप पोटेंशियल, सपोज मैं क्या बताना चाहता हूं, देखिए यहां पे लेट मी फर्स्ट इरेज सम पार्ट, ओके। सो देखिए क्या मैं, व्हाट डज इट मीन, बेसिकली इट मीन्स कि अगर आपका, ये देखिए गैप्स, तो यहां पे देखिए dr का गैप कम है, dr फिर गैप बढ़ रहा है, dr का गैप बढ़ रहा है यहां पे। तो जितना dr का गैप बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल डिक्रीज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल डिक्रीज, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक न्यूमेरिकल सम्स है। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन, फाइंड द इंक्रीज इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल थ्रू अ हाइट ऑफ 50 सेंटीमीटर। मतलब क्या है, वी नो E इक्वल टू माइनस dV/dr, देयरफॉर माइनस dV इज इक्वल टू E इंटू dr। इसका मतलब क्या है, 10 इंटू, और ये कितना दिया है 50 into 10 to the power minus 2, right? So it is coming how much, 100, so this is 50 volt, this is Newton Coulomb, this is the
फाइंड द इंक्रीज इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सॉरी, ये मैंने यूनिट गलत लिख दिया है। ओके, सो द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जैसे आप जानते हैं पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, पोटेंशियल इज अ वर्क डन बाय चार्ज, सो इट इज जूल्स पर कूलम, it is the joules per coulomb. So this is the increase in the electric potential, 50 joules per coulomb, correct. Next, electric field at xyz, ये आपका electric field दे दिया है which is V is equal to 4x square. Find the electric intensity at 1,2. तो electric E क्या होता है, minus dV by dr electric, this is, so it is minus 8x, therefore E is equal to minus 8 into x क्या है 1, x is 1, therefore E is coming out to be minus 8 Newton and Coulomb. So this is the electric field. Clear? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर और क्या टॉपिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस Q1 एंड Q2। ओके, सो लेट्स सी हियर, दिस इज अ चार्ज Q1 एंड दिस इज अ चार्ज Q2। सो हम क्या निकालना चाहते हैं, व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द टू चार्जेस, इन दोनों में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है। सो फर्स्ट सी, what I want to do, that is I am bringing a charge Q2 from infinity to Q। ये देखिए यहाँ से I will bring the charge from infinity to Q2 to this point, so I am bringing the charge Q2. This Q2 is at a distance of r from Q1. Now what is happening, तो इस Q1 के लिए यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, we have already done। Q1 के लिए potential at R will be this, right, and we know work done by the charge Q2 will be potential into the work done. We know V, W is equal to the potential into the charge, we know W equal to the potential into the charge। तो ये रहा पोटेंशियल Q1 by 4 pi epsilon r। तो इस Q1 के लिए यहाँ पे पोटेंशियल क्या था, दिस इज द पोटेंशियल, और जब यहाँ पे पोटेंशियल है या ये, और यहाँ इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या होता है, 0। सो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस इज दिस ओनली, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। सो वर्क डन क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू द चार्ज। सो ये देखिए पोटेंशियल डिफरेंस इनटू द चार्ज Q2। सो दिस इज द वर्क डन इफ आई वांट टू मूव अ चार्ज Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू अ डिस्टेंस r फ्रॉम अ चार्ज Q1। ओके, नाउ वी नो वर्क डन इज द एनर्जी, तो यही मेरा पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द टू चार्जेस हो जाएगा। यही जो है मेरा, this is the potential energy between the two charges is 1 by 4 pi epsilon O Q1 Q2 by R। So this is the potential energy in vacuum और air। ये potential energy जो है sorry, we have calculated in vacuum और एयर। क्लियर? नाउ सी, ये तो हमने ओनली फॉर टू चार्जेस किया है। सपोज देयर आर n चार्जेस, सो रिमेंबर इट, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू n चार्जेस विल बी दिस। यहाँ पे आप देखिए एक हाफ लगा हुआ है, हाफ समेशन ऑफ 1 to n चार्जेस Q1 Q2 बाई ये रहा। Why is this half taken? Half is taken because हर बार इसके देखिए फर्स्ट क्या आएगा, between the two charges it will be Q1 Q2 by 4 pi epsilon O r 1 square plus
अब Q2 Q3 के लिए क्या आएगा, Q2 Q3 4 पाई एप्सिलॉन ओ R2 स्क्वायर। अब Q3 Q4 के लिए क्या आएगा, Q3 Q4 बाई 4 पाई एप्सिलॉन ओ R3 स्क्वायर। तो देखिए हेयर वी हैव यूज्ड Q3 है ना, Q2 देखो दो बार लिया है। सो दैट इज वाई, सो दैट दो बार नहीं ले लें, तो दैट इज वाई द हाफ इज टेकन, क्लियर। चलिए अच्छा, रिमेंबर वन थिंग, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 10 टू द पावर -19 जूल्स। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी का एनर्जी यूनिट क्या होता है, जूल्स है, बट इफ आई वांट टू कन्वर्ट इट टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज द वे आई कैन कन्वर्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसका सिंबल क्या है, फाई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई, व्हाट इज इट, द टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ गिवन एरिया। ये रहा मेरा एरिया ds, डेल्टा s क्या है, एक एरिया है, इसमें से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहे हैं। सो दैट इज E डॉट ds इज माई टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग अ गिवन एरिया, सो E डॉट ds। सो यहां देखिए, अगर मेरा दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग, और मेरा ये सरफेस है, मेरा ये सरफेस का जो नॉर्मल, जनरली व्हाट वी विल टेक, कोई भी सरफेस हम लोग लेते हैं तो इसका एरिया वेक्टर क्या होता है, प्लीज रिमेंबर, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर देखिए परपेंडिकुलर है, सो इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा, सो रिमेंबर इट। तो तब फ्लक्स क्या होगा, E डेल्टा S कॉस थीटा, तब फ्लक्स क्या होगा, डी फाई क्या निकलेगा, E इनटू जो एरिया है एंड कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम, राइट। तो यहां पे देखिए द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब थीटा इज कमिंग आउट टू बी 0 डिग्री हेयर, एंड हेयर थीटा एक आपको मिल रहा है, राइट हेयर। सो इफ द सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, सो एरिया वेक्टर डायरेक्शन क्या होगा, 0 डिग्री, एंड if the area vector is parallel to the electric field, if the area vector is parallel to the electric field, तो आपका यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, थीटा will be 90 डिग्री। if the area vector is parallel to the electric field, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर एरिया वेक्टर अगर पैरेलल है तो थीटा विल बी 90 डिग्री। यहाँ क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड से एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर, सो थीटा विल बी 0 डिग्री, क्लियर। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। सो हियर आई हैव गिवन, सो अगर वो परपेंडिकुलर होगा सो थीटा विल बी 0 डिग्री एंड द फ्लक्स विल बी द मैक्सिमम, क्योंकि फ्लक्स का क्या है, फ्लक्स इज व्हाट, E ds cos थीटा। सो अगर थीटा 0 डिग्री होता है तो फ्लक्स इज मैक्सिमम, एंड इफ थीटा इज 90 डिग्री द फ्लक्स is minimum. Please note it that flux will be minimum if theta is 0 डिग्री। अगर 90 डिग्री है तो थीटा इज मिनिमम। सो फॉर ए क्लोज सरफेस, अगर सरफेस क्लोज्ड हो, सपोज करिए एक स्फीयर है या फिर एक क्यूब है, सो दिस इज अ क्लोज सरफेस, सो टोटल फ्लक्स कमिंग आउट of the surface will be line integral of E dot ds, that is line integral of E ds cos theta, okay। तो यहाँ आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे कि how is the electric field coming out from that area। flux क्या होता है, lines of force होता है, so which is a scalar quantity, it's a scalar quantity, we are interested only the magnitude, so its SI unit is what, Newton meter square per coulomb, that means इसका क्या है, Newton meter square per coulomb। so we know that flux is E into ds,
और इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। सो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम उसका हो गया, एंड दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वी आर कमिंग ऑन टू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, very important topic, which is called Gauss's theorem, which is Gauss's theorem। तो Gauss's theorem क्या है, चलिए देखते हैं। The Gauss's theorem says कि अगर हम कोई भी क्लोज सरफेस ले लें, तो व्हाट इज द फ्लक्स कमिंग आउट, ही टोल्ड इसका लाइन इंटीग्रल करिए, E डॉट ds करिए, एंड ही टोल्ड it will be the q by epsilon o। ये q क्या है, the charge inside the surface, the total flux coming out from any closed surface will be line integral of E dot ds, which is phi by epsilon o। वो क्या कर रहा है, जस्ट आपको जानना है कि सरफेस के अंदर चार्ज क्या है। सो either you do it like this or you do it like this, q by epsilon कर दीजिए तो भी आपको मिल जाएगा। So that means, see, I know that flux is inversely proportional to 1 by epsilon times। मतलब अगर आप इसको वैक्यूम में करेंगे तो फ्लक्स सबसे ज़्यादा होगा, and if you keep it in a medium like water or any other medium, the flux will decrease, total flux linked with the surface will decrease। Next, there is no contribution of electric flux from the charges outside। मतलब अगर चार्ज यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, so it will contribute nothing to the flux coming out from the surface, it will contribute nothing to the flux coming out from the surface। ठीक है, चलिए, तो ये जो प्रूफ है कि गॉस टोल्ड दैट फाई इज इक्वल टू q by epsilon o, चलिए इसका प्रूफ कर देते हैं। लेट अस टेक अ स्फीयर ऑफ रेडियस r जिसके अंदर एक चार्ज है प्लस q, राइट। नाउ लेट अस इमेजिन अ सरफेस ds। तो मैंने कहा, तो सी वॉच हियर वन थिंग, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर जाएगा, लाइक दिस। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर जाएगा, लाइक दिस, ओके। एंड दिस इज अ सरफेस, मैंने कहा था उसका नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है, सरफेस से परपेंडिकुलर। दैट मीन्स E एंड N आर इन द सेम डायरेक्शन, E एंड N, तो उसमें उसके बीच में एंगल क्या होगा, 0 डिग्री, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ds। वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट सपोज P ऑन द सरफेस is given as this। now flux क्या होता है, E dot ds। so ये रहा E dot ds through this surface ds। so what is the total flux coming out, the total flux coming out will be the integration of this, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, लाइन इंटीग्रल। so E is q by 4 pi epsilon o r square, लाइन इंटीग्रल ऑफ ds। और लाइन इंटीग्रल ऑफ ds मतलब टोटल सरफेस एरिया कितना है, 4 pi r square फॉर अ स्फीयर। 4 pi r square will cut, it is coming q by epsilon। that means this is what Gauss told, कि the total flux coming out from a closed surface having a charge q is q by epsilon। so देखिए इसमें q by epsilon o में there is no mention about कि is there any formula which is coming due to the shape of the surface, नहीं। तो अगर आपका शेप ऐसा भी हो and you have a charge q, so flux coming out will be again q by epsilon o। अगर आपका शेप ऐसा हो, having charge, so the flux coming out will be again q by epsilon o, means because there is nothing about the shape of the surface, so the total flux coming out is equal to this, correct। so
ओके फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट थिंग व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज, तो हमने क्या आपको क्या कहा कि इफ फाई विल बी इक्वल टू व्हाट, क्यू बाई एप्सिलॉन ओ, मतलब अगर एक बॉडी में चार्ज ही नहीं होगा, अगर एक बॉडी में चार्ज नहीं होगा, इफ अ बॉडी डज नॉट हैव चार्ज इनसाइड, तो इसमें फ्लक्स कितना आएगा, विल बी जीरो, राइट। नाउ दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम से कूलम्स लॉ, गॉस थ्योरम ने क्या कहा था, यही कहा था कि टोटल फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ अ क्लोज्ड बॉडी विल बी क्यू बाई एप्सिलॉन ओ। तो यहां से कूलम्स लॉ विच इज एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन ओ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये कैसे निकालेंगे, यहां से यहां कैसे जाएंगे। ओके, तो लेट्स सी। So let us take an isolated body which is positively charged at the center, placed at the center of radius r. तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखिए कैसे होगा, इट इज आउट बिकॉज इट्स अ पॉजिटिव चार्ज। तो हियर लेट अस इमेजिन अ स्मॉल एरिया ds, वहां पे देयर इज अ चार्ज q0 being placed. Okay, and let us take this as q1. First of all, let me first explain you till here. तो गॉस थ्योरम में क्या कहा था कि टोटल फ्लक्स कमिंग आउट विल बी q बाई एप्सिलॉन ओ, लाइन इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds, यही तो फ्लक्स का था, फ्लक्स वाज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन ओ. So now see the direction of the normal vector. नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, दिस इज नॉर्मल वेक्टर एंड दिस इज इलेक्ट्रिक वेक्टर. तो दोनों का डायरेक्शन क्या है, एक ही डायरेक्शन में है. सो द एंगल इज 0 डिग्री. सो ई डी एस कॉस जीरो इज 1 क्यू बाई एप्सिलॉन ओ. सो ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन ओ. ई कॉन्स्टेंट है, वो बाहर चला जाएगा. तो लाइन इंटीग्रल ऑफ डी एस मतलब है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी विच इज 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू दिस. सो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको ये मिल गया. दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट is this. So if I place any charge q0, if I place any charge at q0 जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, so what is the force? Force is given as q into E. तो यहाँ फोर्स क्या होगा, it will be q0, it will be q0 into q1. यहाँ पे q लिया इन्होंने, ठीक है, let us take it as q. So it will be q, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा ये है, and I have placed a charge q0 here. So what is the force coming? It is q0 4 pi epsilon o r square. और यही फॉर्मेट तो मेरा Coulomb's law था. So we got the Coulomb's law. We got the Coulomb's law here, right? Next, the main important thing is the application of Gauss's law. The main important thing is the application of Gauss's law. तो first हम लोग क्या देख रहे हैं, देखिए, we want to find out electric field due to infinitely long straight charged wire. ये एक infinite charged wire है, means it's continuing infinitely. So I've taken an infinite charged wire, उसका मैंने कुछ पोर्शन ले लिया है at P1 and P2. Okay, and suppose, अच्छा, this is the center O, and suppose from at a distance of r from the wire, I have at a distance P, ये जो r है, I want to find out the electric field. I want to find out electric field here, right? So for C, for example C, ये जो P1 portion है, it is a small part and P2 is also a small part. तो इस स्मॉल पॉजिटिव चार्ज के लिए यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन. एंड फॉर दिस P2 द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन विल बी लाइक दिस, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइक दिस.
तो अगर मैं इसको रिजॉल्व करूं, सो दिस विल बी इन दिस पार्ट व्हाट विल कम, देखिए अगर ये थीटा है, सो अगर ये थीटा है तो दिस इज थीटा, this is also theta, right? This is cos theta, this sin theta this will come theta, right? So this will come E1 cos theta plus E2 cos theta, और इधर क्या आएगा, E1 sin थीटा, और इधर क्या आएगा, E2 sin थीटा. So let us now see, we see that total horizontal components will cancel out, and only the vertical components will be added up. So total electric field जो आएगा, I have taken the length L, total electric field जो आएगा, it will be the line, total electric field क्या आएगा, total electric field coming out will be the flux coming out will be what, line integral of E dot ds, line integral, flux का फॉर्मूला क्या है, line integral of E dot ds. तो यहाँ पे देखिए, imagine that we have taken ये जो P1 and P2 है, imagine it is of length L, यहाँ देखिए I have shown it as a length L, ये पॉजिटिव चार्ज है. Imagine at a distance of r I make a cylinder. Imagine कि ये एक सिलेंडर है, इतने डिस्टेंस r तक हमने एक सिलेंडर बना दिया है. I am making a cylinder, ठीक है, and this line passes through the axis of the cylinder. तो मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज वर्टिकल कंपोनेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड आई एम नॉट गेटिंग. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आई एम नॉट गेटिंग, ओनली वर्टिकल कंपोनेंट्स जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ये है. सो इमेजिन देयर इज अ स्मॉल एरिया ds. तो देखिए इसका, इस ds का जो एरिया वेक्टर है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, सो द एंगल इज 0 डिग्री. सो E डॉट ds को कैसे लेंगे, E ds cos थीटा. नाउ इन E ds cos थीटा, ये आप देख रहे हैं कि एंगल वॉज 0 डिग्री, तो E ds cos 0 डिग्री, cos 0 इज 1, सो E ds, E बाहर आ जाएगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ ds, मतलब ये जो सिलेंडर इमेजिनरी आपने लिया था, दिस इज द इमेजिनरी सिलेंडर, ये सिलेंडर, इस सिलेंडर का सरफेस, कर्व्ड सरफेस से ही देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, कर्व्ड सरफेस से ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है. सो व्हाट इज द टोटल कर्व्ड सरफेस, व्हाट इज द टोटल कर्व्ड सरफेस, इट इज 2 pi RL, 2 pi RL. तो फ्लक्स कमिंग आउट विल बी E इंटू 2 pi RL. बट गॉस ने क्या कहा था, फ्लक्स कमिंग आउट इज Q बाई एप्सिलॉन O. सो E इंटू 2 pi RL इज Q बाई एप्सिलॉन O. सो E इज Q बाई 2 pi एप्सिलॉन O R इंटू L. L इज द लेंथ ऑफ द सिलेंडर. अब यहाँ पे एक चीज देखिए, इट वॉज अ इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, ठीक है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज, सपोज वी गेव अ पॉजिटिव चार्ज, इसका टोटल वायर लेंथ में क्या था, पॉजिटिव चार्ज था. ओके, सो लेट अस इमेजिन दैट लैम्डा इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ. सो व्हाट इज Q, Q इज लैम्डा इंटू L, Q इज लैम्डा इंटू L. तो यहाँ बिठा दिया Q के बदले लैम्डा इंटू L, L कट जाएगा. सो दिस इज माई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, lambda by 2 pi epsilon r. So we can see that electric field is varying inversely to the distance from the wire. ये वायर है और ये डिस्टेंस है. इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज inversely as the distance of the from the infinite wire, right? So if the lambda is positive, मतलब अगर Q positive है, so lambda is positive, that means E will be radially outwards. और अगर Q negative है, if Q is negative, lambda is negative, so E will be radially inwards. वो अगर positive है तो outwards, और अगर negative है
तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इट विल बी इनवर्ड्स अगर लैम्डा नेगेटिव है तो, राइट। चलिए, सो लेट्स सी नेक्स्ट। So that was due to a line wire, infinitely long line wire, infinitely long line wire. चलिए, अब हम लोग जाते हैं due to uniformly charged spherical shell. Uniformly charged spherical shell में electric field हम लोग निकालेंगे, correct? So let us see. Suppose this is a shell. Suppose this is a shell of radius r in which we have charged it fully, positive charge सब तरफ इसको, it has been distributed uniformly over the shell. We have distributed uniformly over the shell charge q of radius r. Suppose we take a distance of radius r and imagine a shell, suppose we at a distance of r we imagine a shell surface, और यहाँ पे हमने we have taken a small area on the surface, तो इसका देखिए एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आर इन द सेम डायरेक्शन, सो इनके बीच में थीटा विल बी 0 डिग्री. So now what is the flux coming out according to Gauss law? It is line integral of E dot ds, or so it is E ds cos theta, and theta is 0 degree, so E ds, so E is constant, E will come out, line integral of ds, तो हमने ये surface imagine किया है S1, so its total surface area is 4 pi r square, so this is the flux, but Gauss ने तो कहा था total flux is q by epsilon O, so q by epsilon O is E into 4 pi r square, so electric field due to a spherical shell at a distance of radius r is given as q by 4 pi epsilon O r square, q by 4 pi epsilon O r square. तो इसका मतलब देखिए आपको क्या लग रहा है, isn't it same that if charge q is placed at a distance of r, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, we already studied this, q by 4 pi epsilon O r square, we already studied this, तो ये भी तो वही निकल रहा है. So when the distance is very large, it is looking as if ये shell जो है it is like a point charge, it is looking as if it is like a point charge. तो यहाँ पे देखिए on the surface of the shell, जो हमारा shell था it is of radius r, so उसके surface में लेंगे r will be equal to r and this will be the electric field. Now see, the surface was a solid surface, ये solid surface था of radius r in which the total charge was distributed. That means we will take sigma as the surface charge density. ये जो solid जो spherical shell था, this was a spherical shell जिसमें charge distributed था. This charge was distributed here. So let us imagine that sigma is the charge surface charge density. इसका मतलब क्या है, total charge क्या होना चाहिए, 4 pi r square into sigma. Sigma is the surface charge density, means sigma क्या है, sigma is charge by the area. So area of a shell is 4 pi r square. तो q कितना आ रहा है, 4 pi r square sigma, E equal to this, ये q के बदले ये बैठा दिया, so things will cut out, 4 pi will cut out, एक r cancel हो जाएगा, तो it is sigma by epsilon O, it is r square here, sorry, तो r square will cut out, sigma by epsilon O. That means I see that if I take a point inside जहाँ r will be less than small r, मतलब इस शेल के अंदर लेंगे, तो इस शेल चार्ज इज ऑन द सरफेस, तो शेल के अंदर तो चार्ज है ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0. सो रिमेंबर इट, फॉर अ यूनिफॉर्मली चार्ज शेल inside
electric field is 0. Okay, so let us now see. तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इनसाइड it is 0, at surface electric field is given as q by 4 pi epsilon O r square, and outside r greater than r electric field is given as q by 4 pi epsilon O r square. तो यहाँ पे देखिए, till center to the radius, देखिए there is no electric field and it becomes maximum at the surface. देखिए अचानक when you reach r, electric field is maximum and then E becomes this. So देखिए अब ये ऐसे decrease कर रहा है. So this is very important graph. This is the variation of electric field for a spherical shell. Correct? So now let us think about the next part. Okay friends, so let's see electric. Now let's move on to this part. 1 minute. Okay, so electric, we have already seen this is what electric field intensity for a spherical shell. Okay, so let's move electric field intensity due to a non-conducting charge solid sphere. यहाँ देखिए क्या है, this is a solid sphere and what was this? This is a shell. Please keep the things inside properly कि ये एक shell है. This is the shell and this is a solid sphere. So let us imagine a solid sphere of radius r. पहले देखिए इसका रेडियस हमने क्या लिया है, r, and have a charge q. तो ये जो charge q, we'll place a charge q. Please understand the charge is fully, because it's a conducting, non-conducting, it's a non-conducting, means charge flow नहीं कर पाएगा. Charge q will not flow. So we have taken a bigger, this is our sphere of radius capital R. Let us imagine another non-conducting sphere of small radius r. ठीक है, small radius r, where r is less than r. Now we know that the charge on this sphere, the charge, the total sphere is, पूरे बड़े sphere में charge कितना था, q. Because it's non-conducting, let the charge on the inner sphere be q dash. Let the charge on the inner sphere be q dash. तो we know flux coming out will be line integral of E dot ds. ये हमको पता है. Okay. So flux will be E dot ds and the direction of the normal vector and the electric field are same direction, so 0 degree. So E ds. So it is E ds. Okay. Now ds is 4 pi r square. We have imagined the smaller sphere. हमने छोटा वाला sphere लिया है r. And this was our bigger sphere. This was our bigger sphere, capital R. So Gauss theorem says q equal to, the flux coming out is q by epsilon O. So here this is the flux, E equal to 4 pi r square q by epsilon O. So this is the electric field due to the smaller sphere. अब देखिए sigma. What is sigma? Sigma is the charge per unit volume. Okay. So sigma is the charge per unit volume. So what is the total charge? It is the volume 4 by 3 pi r cube into sigma. Sigma क्या है? Sigma, यहाँ देखिए, sigma is the charge per unit volume. तो charge क्या होगा? Volume into sigma. Okay. So here we are writing 4 by 3 pi r cube into sigma. तो यहाँ पे q के बदले हम लोग यहाँ put कर देंगे. So what will remain is this, r sigma by
3 epsilon O, r sigma by 3. So this is the electric field at a distance of r from the center, okay, where sigma is the charge per unit volume. So we can see electric field is directly proportional to the r. That means for a non-conducting charge sphere, it is directly proportional from the center, directly proportional from the center. ठीक है, अगर नॉन कंडक्टिंग हो और अगर शेल हो, सी इफ इट वाज अ शेल, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं फॉर अ शेल दिस इज इनसाइड में क्या है, इनसाइड इट इज जीरो, इनसाइड इट इज जीरो एंड ऑन द सरफेस it is proportional to 1 by r square and outside the surface 1 by r square. लेकिन अगर solid sphere हो, so see inside the surface it is proportional to r and outside the surface it is proportional to 1 by r square. तो इसी को अगर हम लोग प्लॉट करेंगे, right, at the center it is 0, क्योंकि r 0, because if r is 0, E is 0. If r is 0, E is 0. तो at the center it is 0 और जितना, so proportional to r, so at the surface it will become this which is maximum, उसके बाद वो decrease करेगा. So this is the variation of the electric field from the center of a non-conducting charged sphere. Clear? So let us see now इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज. ये देखिए, वी हैव टेकन अ वेरी थिन शीट विच इज पॉजिटिवली चार्ज्ड. ये सिग्मा क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया. सिग्मा क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ द शीट. सो बिकॉज इट्स अ पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी आउट ऑन बोथ द सर्फेसेस. Electric field is out on both the surfaces. ठीक है, so electric field due to a thin sheet, remember it is sigma by 2 epsilon O in vacuum, and if it is a uniform thickness, अगर उसमें थोड़ा सा thickness हो, so imagine it, इस surface के लिए तो electric field is out और इस surface के लिए भी electric field will be out on both the parts. तो दोनों part होगा. तो for both the surfaces it is this, so it is sigma by epsilon O. If it is a thick sheet, if it is a thin sheet, sigma by 2 epsilon O. Now imagine we are having two thin sheets positively charged, and we will take three regions, region 1, region 2 and region 3. तो एक एक करके देखते हैं. देखिए, तो लेट अस हियर इमेजिन, इसमें चार्ज पर यूनिट एरिया इज सिग्मा 1. लेट अस इमेजिन इसमें चार्ज पर यूनिट एरिया इज सिग्मा 1 एंड इसमें चार्ज पर यूनिट एरिया इज सिग्मा 2. सो लेट अस ऑल्सो इमेजिन दैट सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2. तो फिर क्या होगा? Let us see in this region, electric field due to this sheet will come out, electric field due to this sheet will also come out. So देखिए E2 and E1, इस शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर आएगा, इस शीट के A शीट के लिए भी बाहर आएगा, B शीट के लिए भी बाहर आएगा. So the net electric field will be minus of E1 minus of E2 because it is oppositely directed. तो ये हो जाएगा. इन द रीजन 2, देखिए क्या होगा. फॉर दिस पॉजिटिव शीट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन एंड फॉर बी पॉजिटिव शीट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन. सो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन है. सो इन द रीजन 2 इट विल बी दिस इज सबट्रैक्टेड एंड सिंस सिग्मा 1 is greater than sigma 2, तो E1 will be greater than E2. E1 is greater than E2. In region 3, देखिए what is happening. तो A शीट के लिए भी बाहर आएगा
एंड बी शीट के लिए भी बाहर आएगा. सो नेट फील्ड विल बी एडेड अप to sigma 1 by 2 epsilon O, sigma 2 by 2 epsilon O, right? So now here we will imagine कि अगर we will imagine, let us rub few parts and let us show you some important points. Let me show you. So this we have understood what is happening what, and now let us see if sigma 1 equal to sigma 2, तो क्या होगा देखिए, the net electric field will be minus sigma by epsilon O, and here the net electric field will be 0, and here the net electric field will be sigma by epsilon O. ये आपका electric field due to the three regions. If the sigma 1 is equal to sigma 2, this is the electric field due to the three portions, right? इसके बाद हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, वी विल शिफ्ट टू द न्यूमेरिकल पार्ट्स. वी विल बी स्लोली शिफ्टिंग टू द न्यूमेरिकल पार्ट्स. So friends, so let's see how we can start to solve. So now let us start doing the numericals one by one. तो देखिए यहाँ पे एक न्यूमेरिकल्स है कि दिस इज अ स्क्वायर ABCD. So they are telling that there is a charge 2 microcoulomb kept at A and 10 microcoulomb kept at the center. Question is, what is the work done if I move it from A to B? What is the work done if I move from A to B? Now you see here, suppose this distance is A, so this distance is also A. So what is the potential of 10 microcoulomb at A? That means potential at A due to the 10 microcoulomb will be 1 by 4 pi epsilon O Q, that is 10 into 10 to the power minus 6 by A. Similarly, what is the potential due to the 10 microcoulomb at B? So it will be 10 into 10 to the power minus 6 by A. So what is the potential difference between A and B? So it will come 0 because these two values are same. Now we know that the potential difference here has come 0 and work done is equal to the potential difference into the charge which we want to move, that is 2 microcoulomb. So work done will be 0 into the charge. So work done will be 0. Okay, so this is how. So if I move this charge from A to B, the potential difference at A and potential difference at B will be same, so the work done will be 0. Clear? So now let us see the next sum. They are telling there is a sphere in which at the center there is a positive charge kept. If I move a point charge from A to C and then to B, what is the work done? Since work done, so see, this is a work done does not depend upon the path, so I can tell work done will be the potential difference at A minus
the potential difference at B into, due to the charge Q, okay, into the point charge. Suppose the point charge is Q dash. So now see, at A, the potential difference due to the charge Q will be 1 by 4 pi epsilon O. It is Q by the radius. And potential difference at B will be 1 by 4 pi epsilon O. It will be Q by the radius. So therefore the potential difference should come 0, and therefore the work done, which is the difference in the potential into the charge carried, and which will come 0. So this is, so the work done to carry a charge from A to B, first going to C, and so ultimately we want to know what is the potential difference at A, what is the potential difference at B due to these charges, which is kept at the center at a radius r. So since the potential differences are 0, so the work done from carrying a charge from A to B via C should be 0. Next, see, so this is the charge given. They are telling from infinity to a point P 5 centimeter away from a charge. So this is a charge 4 into 10 to the power minus 7 Coulomb. So from here they are telling that it is 5 centimeter away, and I want to bring a charge. Suppose this is at P, and I want to bring it at Q. From infinity, I want to bring the charge at Q. What charge? The charge is 2 into 10 to the power minus 9 Coulomb. I want to bring this. So first of all, what is the potential at Q due to P? Potential at Q due to the charge which is kept at P. So it is 1 by 4 pi epsilon O, 4 into 10 to the power minus 7 by, distance is 5, so 5 into 10 to the power minus 2, and we know 1 by 4 pi epsilon O is 9 into 10 to the power 9, and this is 4 by 5 will be 0.8 into 10 to the power minus 5, so which is coming 7.2 into 10 to the power 4 volts. Now work done. So we know potential at infinity is 0. So work done will be the difference in the potential, that means VQ minus V infinity into the charge. So W is equal to, so it will be 7.2 into 10 to the power 4 into V infinity is 0. This is 0. So the charge which we are bringing, 2 into 10 to the power minus 9. So work done will come, that is 14.4 into 10 to the power minus 5 joules. This is the work done. Clear? Next, let us see. There is an infinite number of charges, each of plus q, are placed at x axis. So see, this is an, ये मेरा x axis है, and what are the charges which we are placing? So this is x equal to 0, and we are placing at x equal to 1, we are placing a charge plus q. At x equal to 2, we are placing a charge plus q. At x equal to 3,
we're placing a charge plus q, x equal to 4, at x equal to 4. So we are placing a charge that is at x equal to 4 q, and at x equal to 8 we are placing a charge plus q, and this continues. So they are telling what is the charge, what is the total potential at x equal to 0. यहाँ पे potential क्या होगा? So see, for the first charge we can tell it will be 1 by 4 pi epsilon O q by 1. V2 will be 1 by 4 pi epsilon O q by 2. V3 will be 1 by 4 pi epsilon O q by 4. V4 will be 1 by 4 pi epsilon O q by 8. So this continues. So net potential will be V1 plus V2 plus V3 plus ... That means I can say that V equal to, if I take common, q by 4 pi epsilon O 1 plus 1 by 2 plus 1 by 4 plus 1 by 8 plus, it is up to infinity. So it is coming q by 4 pi epsilon O. Now see, this is the GP series. GP series, so I can tell you sum of the GP series, sum of infinite GP series will be A by 1 minus R. What is A? A is the first term. So it is, the first term is 1 by 1 minus R. What is R? R is the common ratio. Ratio क्या है देखिए, it is actually half divided by 1 is half, 1 by 4 divided by half is half, 1 by 8 divided by 1 by 4 is half. ठीक है, so the ratio is coming, common ratio is coming half. तो V कितना होगा? It will come 2q by 4 pi epsilon O. Okay, so again I am telling you this R, ये R का वैल्यू क्या होता है? R का वैल्यू I am showing it here. R is actually the next term divided by the previous term. So 1 by 4 divided by 1 by half. So 1 by 8 divided by 1 by 4, और ये every time it's coming half. So we are putting it in this formula and we are getting the value of the potential at O. Okay, so this is the value of the potential at O due to the number of charges which are infinitely kept along the x-axis. ठीक है, चलिए. So next sum, there are two charges, this and this, are located 15 centimeter apart. At what point on the line joining the two charges is the electric potential 0? So see, the first charge, let me give it the name as Q1 and this is Q2. So Q1 and this is Q2. They are located 15 centimeters apart. 15 centimeters apart. So now they are telling at what point, suppose at O, it is x from here. So 15 minus x from here. Suppose at O, the total potential, electric potential is 0. So let's see. So the potential due to the first charge Q1 at O will be how much? It will be 1 by 4 pi epsilon O
and Q1 is given 3 into 10 to the power minus 8 by x. Okay, similarly V due to Q2 will be how much? 1 by 4 pi epsilon O, and it is a minus charge, so here will come a minus. So it क्या होगा? So 2 into 10 to the power minus 8 by, so it is, see, 15 minus x, right? So now they are telling the electric potential will be 0. That means what? V of Q1 should be equal to V of Q2. So let's equal it. So 1 by 4 pi epsilon O, 3 into 10 to the power minus 8 by x, 1 by 4 pi epsilon O, it will be 2 into 10 to the power minus 8 by 15 minus x. So this and this and this and this cuts, sorry, this will not be cut, this will not be cut, this will not be cut. So I can tell that it is 3 by x should come equal to minus 2 by 15 minus x. So if I cross multiply, it will be 45 minus 3x, and this will come minus 2x. Okay, so therefore, so we can write that is 45 equal to 3x. Actually what we have to do is that we have to take the positive sign of this, because the potentials are same. Okay, they will cancel each other. So it will be 3x plus 2x. So 5x is 45, x is 9 centimeter. That means 9 centimeter from the first charge, the potential between the two charges will be 0. Correct? Chalo. So friends, let's move on to the next sum. I think one more sum is here. 4 point charges, 1 microcoulomb, 1 microcoulomb, 1, 1, minus 1, minus 1 are given here. So what are they telling? That is, they are telling that the side of the squares are given 0.1 meter each. What is the potential at O, center? Okay, so potential at the center. So see here, if the side of the square is 0.1 meter, so definitely we can find the, we know that the diagonal of a square is how much? Root 2 into the side. So AO should be how much? Half of this. Should be how much? 0.1 by root 2. So now, so let us calculate, that is, the potential at A will be how much? Let us take 1 by 4 pi epsilon O as K. So it will be K 1 into 10 to the power minus 6 by the distance 0.1 by root 2. Okay, so what is the potential due to B? It will be how much? K 1 into 10 to the power minus 6
by the distance OB. OB is equal to OA. Similarly, what is the potential due to C? It will be, the charge is minus, so minus K 1 into 10 to the power minus 6. Again the distance is same. And now what is D? Potential at D will be, again it's minus, so minus 1 minus, that is K, charge is 1, so 1 into 10 to the power minus 6 root 2 by 0.1. So see, therefore net potential at O, we have to add all the potentials. So see, if I add all the potentials, so these two, this will cancel this and this will cancel this, so the net potential at O will be 0. Clear? Net potential will be 0. Next they are telling E is the midpoint of BC. That means if E is, this is 0.5, so it will become 0.05, 0.05, this is 0.05. Okay, now they are telling that if I take an electron from here to E, what is the work done? So first of all, you see, you have to find out, let me little bit make space. I hope you have copied this. Okay, so please pause the video and copy the things. So I have to rub it out. Okay, please copy the things. Whichever I have done, please copy the things. जैसे भी मैंने दिखाया है, please copy them. Understand them and then copy them. That will help you, because I have to rub it out so that I can create some space. So chali, the second part says, that if I carry an electron from this to this, what is the work done? Okay, so first of all, I have to find out the distance of this much. Okay, so what is AE? AE and DE. How much will it be? It will be root over 0.1 square plus 0.05 square. That means this will be 0.01 plus, this is 5 into 10 to the power minus 4. So this is actually 1 into 10 to the power minus 2 plus 5 into 10 to the power. So here what I can do, one thing extra, that is I can do a little bit calculation like this. 0.05 so this is coming 1.05 into 10 to the power minus 2, which will come 10 to the power minus 1 into 1.05. Okay, so now let's do. So please copy this value because we will need it. So AE or AD, DE is coming this much. So let's now find out. So potential at, so first let me remove some space. So I hope you have noted them down.
because we have to create some space to solve this sum. This is a big sum and the space is becoming little bit less. Chaliye. So it was 10 to the power minus 1 root over 1.05. That is the distance. Okay. So see, at E, what are the potentials? Potential at E. What are the potentials at E? So potential at E is actually potential due to A plus potential due to B plus potential due to C plus potential due to D. This is the potential at E, okay, which is coming out to be, this will be K 1 into 10 to the power minus 6 by the distance, which is 1 root over 1.05 into 10 to the power minus 1. Okay. Now due to B, it will be same. Due to VA, now see, VA and VD will be same. VA and VD will be same. So I can write it twice here. I can write it twice here. Twice. Similarly, VB and VC will be how much? It will be K 1 into VB and VC, right? VB and VC, potential due to B and C will cancel each other because distances are same and charges are all opposite. So this and this will cancel each other. This and this will cancel each other. So potential at E is only due to A and D, right? Therefore, and potential at E due to O, this is due to A and B, A and D. Potential at E due to A and D, and this is potential at O due to potential at E due to O will be what? Potential. So we are carrying an electron. So at E due to the potential at E due to, sorry, we have to find the potential at E due to ABCD. At E, it is due to ABCD. A, B, C and D. So see, we already found that it is coming 0, right? So therefore, the potential difference VE due to AD minus VE due to ABCD is actually coming this much twice, and the value of this is K into 10 to the power minus 6 by root over 1.05. Okay, so the value of K is 9 into 10 to the power 9. So which is coming, the potential difference is coming as how much? 18 into 10 to the power 3 by root over 1.05. Therefore work done equal to what? The difference in the potential into the charge, that is the charge of electron. So it is 18 into 10 to the power 3 by root over 1.05, and electron's charge is 1.6 into 10 to the power minus 19. So please calculate this part. Please calculate this part so that, and you get the answer
this part you have to calculate, and you get the answer. This is the work done, right? So this is how you have to do this sum. Next, let's move on to the next sum. And the next sum says that, see, this is a rectangle, 15 centimeter length and 5 centimeter breadth. Here there are charges plus 2 microcoulomb and minus 5 microcoulomb. So they are telling that we have to carry 3 microcoulomb from C to, from A to C. From A to C we have to carry a 3 microcoulomb. So what I have to find? From A to C I have to carry a charge. So I have to find the potential difference at A on D and on B, and the potential difference, similarly potential difference at D and C, right? So what we have to do, we have to carry a 3 microcoulomb from A to C. So what we have to find out? We have to find out the potential at A due to D. Due to D will be what? It is 1 by 4 pi epsilon O Q, which is minus 5 into 10 to the power minus 6 by AD. AD is 5 centimeters, so 5 into 10 to the power minus 2. So which is coming minus 1 by 4 pi epsilon O is 9 into 10 to the power 9. And there is a minus, so sorry, this is 5 into 10 to the power minus 6 by 5 into 10 to the power minus 2. So it is coming out to be minus 9 into 10 to the power, this is minus 4 and this is 5 volts. Similarly, potential at A due to B, potential at A due to B will be how much? Same thing, 1 by 4 pi epsilon O. The charge is plus, so 2 into 10 to the power minus 6, and the distance is 15, so 15 into 10 to the power minus 2, so which is coming 9 into 10 to the power 9, this is 1 by 4 pi epsilon O value, into 2 into 10 to the power minus 6 by 15 into 10 to the power minus 2, so which is coming 18. So I can cut this, 3 3s are 3 5s are, so it's coming 6 by 5 into 10 to the power, see 9, this is plus 3 and this will go to 5 volts. Okay, so next, what is the potential? So we found potential at A due to B and D. Similarly, we will find the potential at C due to A. So what is the distance? So see, this will come root over 15 square plus 5 square, which is coming 225 plus 25, that is 250. And if I do 250, it is coming how much? 25 into 10, that means I can do 5 root 10. Mind it is centimeter. So I'll do 1 by potential at C due to A will be how much? 9 into 10 to the power 9 into the charge is given minus 5, potential at C, yes, no, first of all what I have to
due to A and due to C. Okay, so first there is a little bit mistake here. Okay, so see, we found the potential at A due to D and due to B, that we did. So therefore, net potential at, we have to find out the net potential V net at A will be how much? It is minus 9 into 10 to the power 5 plus 6 by 5 in, plus 6 by 5 is coming how much? 1.2 into 10 to the power 5 volts. So it will be minus 9 plus 1.2, which is coming minus 7.8 into 10 to the power 5 volts. So this is the net potential at A due to D and B. Due to D and B. Similarly, we have to find out net potential at C due to D and B. So see, potential at C due to D is the same thing. The distance I have to take 15 centimeters, so it is the same thing as B on A. It is the same thing as B on A, right? So it will be just minus, because this is a minus charge. So we will find out due to D on C, due to D on C. Okay, at C due to D. So it will be what? 1 by 4 pi epsilon O. Charge is 5 into 10 to the power minus 6, and the distance is 15 into 10 to the power minus 2. So this calculation is already done here, which is, this is not done. So this is 9 into 10 to the power 9 into 5 into 10 to the power minus 6 by 15 into 10 to the power minus 2. So 1 by 3. So the answer is coming minus 3 into 10 to the power 3. It is 5 volts. Similarly, potential at C due to B will be how much? 1 by 4 pi epsilon O, 2 into 10 to the power 6 by 5 into 10 to the power minus 2. So which is coming, this is 9 into 10 to the power 9 into 2 into 10 to the power 6 minus 6 by 5 into 10 to the power minus 2. So it is coming 18 by 5. 18 by 5 is coming 3.6 into 10 to the power this is 5 volt. So therefore V net at C will be how much? This and this value, which is coming plus 0.6 into 10 to the power 5 volts. Therefore, what is the potential difference due to AC? Here it's coming minus 7.8 and here it's coming 0.6. So if I do the potential difference, it is coming, we'll add it up, it's coming 8.4 into 10 to the power 5 volts. Therefore work done will be potential difference into the charge,
and charge is given. So which will come, let me clear out some space. I hope you have copied all these. I hope you have all copied these, please. Otherwise, see the video once again. There is no problem in that. So let's do this. So with the work done will be how much? So potential difference is coming 8.4 into 10 to the power 5 into, and charge is given 3 into 10 to the power minus 6. So it's coming 25.2 into 10 to the power minus 1, which is coming 2.52 joules. This is the final answer. This is the final answer of this numerical. Correct? So friends, keep watching the numericals, what I am doing. Please watch the numericals very carefully, because I am trying to explain you each and every part of it. There are certain calculations which is becoming tough for me to do it here. So better is that if you do it through a calculator, because we are doing very good sums. So next, there is a small charge minus 1.6 10 to the power minus 19 is suspended between two plates 300 volt. So the difference of the potential which is given is 3000 volt, and the distance between the plates is given 5 centimeter. Okay, so they are telling find the mass of the particle. Why? So here we know that electric field is actually minus dV by dr. So electric field which is working here, which is 3000 by 5 into 10 to the power minus 2. So which is coming minus 600 into 10 to the power 2 Newton per Coulomb. Okay, this is the electric field. Now see, this will be attracted. Here is a force acting, and here is the weight. So now, because it is suspended, so I can write force is equal to the weight. So force is what? Q into E, M into G. So I can write Q is given minus 1.6 into 10 to the power minus 19 into minus 600 into 10 to the power 2 is equal to mass into gravity. Okay, so it is coming how much? This is coming 9.6 into 0, so 960 into 10 to the power minus 17 equal to m into 10. Okay, so 960 into 10 to the power, it is coming minus 18 kg. This is the mass of the charged particle which is being suspended. Clear? This is the mass of the charged particle which is getting suspended. So now let's see few more sums. Okay friends, so next sum says, what is the next sum? Let's see.
So here, fine. So see the next sum. There are two identical surfaces A and B which are kept at potential difference 10 volt. That means the difference between A and B. So I can tell that the potential difference between A and B is given 10 volt and B is earth. That means if B is earth, we can tell potential of this is 0 and potential of A is actually 10 volt. Right? This is the meaning of this. Find the magnitude and direction of the electric field. Okay, so first of all, see, electric field will always come out on towards the decreasing direction of the potential. So this is the direction of the electric field. What is the work done in carrying a charge of 20 microcoulomb from X to Y? X to Y. So see, we can see that Vx is on the plate A, so 10 volt. Vy is on the plate A, that is 10 volt. So the difference of the potential Vx minus Vy, which is coming 0. Therefore, the work done, we know work done is equal to the charge into the change of the potential. So which is, since delta V is 0, so the work done is 0. Clear? Very simple sum. Next, two particles of mass 5 gram and charges this and this are kept 1 meter apart. When they are released, calculate their speeds when the separation between them is 50 centimeters. So see, initially, so basically this is the dipole, plus Q and minus Q. Sorry, plus Q and minus Q. So initially their distance was 1 meter apart. Now after some time, when they are released, they are only 50 centimeters. That means plus Q and minus Q is now only 0.5 meter. So they are telling that if I release it and they come so closer, that means what is their speed now, with what speed are they moving. So see, we can see, first of all, let us calculate what is the potential energy in the first case. So it is 1 by 4 pi epsilon O Q1 Q2 by R square. So it is 9 into 10 to the power 9. Q1 Q2 both are same, so it is 4 into 10 to the power minus 5 square by distance is 1, so it's coming 9 into 10 to the power 9 into 16 into 10 to the power minus 10 by 1, so which is coming 144 into 10 to the power minus 1, which is 14.4 joules. Okay, so what is the potential energy in the second case? So it will be 9 into 10 to the power 9 into again 16 into 10 to the power minus 10 by, so it will be half square, distance is 0.5 means half. That means it will, if it goes up, it will become 4 times of this. So 4 times of 14.4, which is coming 57.6 joules.
So what is the difference of the potential energy? So it is 57.6 minus 14.4, which is coming as 0.2, 43.2 joules. Now we know that the increase in the potential energy is due to the change in the kinetic energy. So kinetic energy means change in the kinetic energy is equal to increase in the potential energy. We know that. So half m v square will be equal to 43.2. So if I calculate, they're telling find the speeds. So half into mass is given 5 gram. So 5 into 10 to the power minus 3 v square is coming 43.2. So v square is coming 86.4 by 5. Into 10 to the power 3. So v will come square root of this 86.4 by 5 into 10 to the power 3 meter per second. That is the answer. This will be the answer which will come. So if you can please calculate it, you will get the answer, what speed they were traveling. Clear? This is the answer. So let's see the next sum, friends. देखिए यहाँ पे this is a square given of side D and charges आप देख रहे हैं कैसे charges put किया हुआ है, and at the center it is the charge Q0 is kept. So question is, a charge Q0 is brought to the center E with 4 charges intact. How much extra work is done? तो देखिए, first of all, the charge is brought at this point. तो question ये कह रहे हैं कि what is the extra work done? So first of all, what I have to do is that मुझे first of all निकालना है कि इन वर्टेक्स चार्जेस के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा. ओके, सो पोटेंशियल एट ई ड्यू टू ABCD क्या होगा? इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन O Q बाई, देखिए अगर ये R, अगर ये डिस्टेंस दिस इज D, ये D, तो ये क्या होगा? ये डिस्टेंस आपका, क्योंकि डायगोनल कितना होता है? डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है? √2 इंटू साइड, √2 इंटू साइड. तो हाफ ऑफ द डायगोनल मतलब AE क्या होगा? दिस बाई 2 मतलब D बाई √2. ठीक है, D बाई √2. तो चलिए इसको मिटा देते हैं. दैट मीन्स ईच हाफ ऑफ द डायगोनल इज D बाई √2. सो नाउ लेट अस डू द सम्स हियर. तो यहाँ पे क्या होगा? फर्स्ट चार्ज होगा Q, D बाई √2, तो √2 बाई D. सेकेंड वाला है माइनस Q, सो Q √2 बाई D. थर्ड वाला है प्लस, विच इज Q √2 बाई D. और फोर्थ वाला है माइनस, which is Q √2 by D. तो क्लियरली देखिए पोटेंशियल ड्यू टू ऑल द 4 चार्जेस एट द सेंटर इज 0. ठीक है, एंड पोटेंशियल तो वो कहाँ से आ रहा है? वो इन्फिनिटी से आ रहा है. V at infinity is also 0. That means I can tell the potential difference from infinity to E, from infinity to E is actually 0 ही है. Therefore work done क्या होता है? Work done होता है Q into potential difference. That means work done will be 0 only.
वर्क डन भी जीरो ही आएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ, ये चार्ज है, दिस इज Q1, दिस इज Q2 विथ नो एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है, प्लेस्ड एट दिस एंड दिस, हाउ मच वर्क इज डन सेपरेट इन फाइन। तो देखिए यहां पे क्या होगा, दैट मीन्स दे आर टेलिंग, सो इफ दिस इज द ओरिजिन, एक चार्ज को यहां पे रखा गया है, इट इज एट -9, दैट मीन्स ये 9 सेंटीमीटर ही है, एंड दिस इज ऑल्सो 9 सेंटीमीटर, ये ओरिजिन है। द चार्ज इज 7 माइक्रोकूलम एंड दिस इज -2 माइक्रोकूलम। So how much work is required to separate them infinitely? तो सबसे पहले देखो यहाँ पे they are telling in the first case no external field, that means electric field applied is 0. So first of all you have to separate it. How much electrostatic potential is a system consists? Determine the potential in the system consisting of this with no external field placed at this. Okay, how much is the work required to separate them infinitely? तो इनको infinitely separate करना पड़ेगा। तो first of all देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये 0 है, राइट। तो अगर ये 0 है, so friends see here, यहाँ पे they are telling that first of all what is the initial potential energy, determine the electrostatic potential energy। चलिए तो U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन O Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता है, विच इज 7 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू -2 इंटू 10 टू द पावर -6 बाई, ये दोनों में डिस्टेंस कितना है, 18। सो 18 इंटू 10 टू द पावर -2, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। सो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और ये 7 2s are 14 इंटू 10 टू द पावर -12 बाई 18 स्क्वायर का कितना होता है, 324 इंटू 10 टू द पावर -324 नहीं होगा, यहाँ तो 18 ही लेना पड़ेगा। सो विच इज, दैट मीन्स आई हैव टू टेक हियर दिस ओनली, 18 इंटू 10 टू द पावर -2। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 7, दैट इज 7 इंटू 10 टू द पावर, इधर आपका -3, सो -1, दिस इज द जूल्स, दिस इज द एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इनिशियली। अब देखिए दे आर टेलिंग हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट देम इनफाइनाइटली। अब इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाता है, 0 हो जाएगा। तो यहां पोटेंशियल एनर्जी इतना है, इन्फिनिटी पे इतना है, सो व्हाट इज द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी, एंड दैट इज द वर्क डन। तो यही होगा 7 इंटू 10 टू द पावर -1 जूल्स, करेक्ट, यही आपका हो जाएगा। ओके, सो फॉर द नेक्स्ट पार्ट दे आर टेलिंग, अगर मैंने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया इतना, व्हाट इज द टोटल एनर्जी नाउ। तो इसको थोड़ा सा क्लियर अप कर लेते हैं, जगह को थोड़ा क्लियर अप कर लेते हैं, लेट्स सी। दे आर टेलिंग कि अगर हमने एक, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी या वैल्यू याद रखिए 7 इंटू 10 टू पावर -1, दैट मीन्स 0.7 जूल्स। तो अगर नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है कि इफ वी अप्लाई एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड
तो क्या होगा. ओके, सो लेट्स डू दिस सम. सो वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाउ मच, माइनस dv by dr. therefore dv क्या होता है, माइनस e dr, राइट. सो यहाँ पे e इंटू डी आर होगा आपका, राइट. सो द वैल्यू इज गिवन. तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी, तो टोटल पोटेंशियल कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी आर माइनस ये है आपका 9 इंटू 10⁵ बाई r² डी आर. तो ये आएगा माइनस 9 इंटू 10⁵, और इंटीग्रेशन ऑफ 1/r² करना पड़ेगा. सो विच इज कमिंग माइनस 9 इंटू 10⁵, इंटीग्रेशन ऑफ 1/r² होता है माइनस 1/r. सो विच इज कमिंग 9 इंटू 10⁵ बाई r. ये आपका पोटेंशियल बन गया, ये आपका पोटेंशियल बन गया, राइट. सो नाउ द क्वेश्चन इज, ये आपका पोटेंशियल बन गया. सो नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर, सो व्हाट इज द टोटल एनर्जी. सो टोटल एनर्जी इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी प्लस, अब देखिए ये जो चार्ज है इसको इस पोटेंशियल में वी नो डब्ल्यू क्या होता है, v इंटू क्यू होता है. तो फर्स्ट चार्ज के लिए क्या होगा, दिस इज माई v, 9 इंटू 10⁵ बाई r इंटू क्यू क्या होगा, 7 इंटू 10⁻⁻⁶. उसके बाद नेक्स्ट वाले के लिए होगा 9 इंटू 10⁵ बाई r इंटू ये -2 माइनस यहाँ पे दे दिया मैंने. सो दैट इज 2 इंटू 10⁻⁻⁶. और इसका वैल्यू ऑलरेडी वी कैलकुलेटेड, इट इज 0.7 जूल्स. हमने पहले कैलकुलेट किया था इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी. प्लस तो देखिए 9 इंटू 10⁵ एंड 10⁻⁻⁻⁻1, दैट इज 0.9 बाई r. ये बाहर आ जाएगा, which is coming 7 minus 2. So total energy 0.7 plus 5, so 4.5 by r. Now okay, so यही रखना पड़ेगा because till what distance you have taken it, it is not given. So this is my total energy and that is only my total work done. यही मेरा total work done है, correct. This is only my total work done. Okay, चलिए next question पे जाते हैं. A charge Q is placed a by at a distance of a by 4. यहाँ पे a by 4 लिख दिया गया है, इट इज a by 2. ओके, सो दिस इज अ प्लेट, स्क्वायर प्लेट. इसके a by 2 में एक चार्ज को प्लेस किया गया है. दे आर टेलिंग फाइंड द फ्लक्स. ओके, तो देखिए ऐसे सम को करने के लिए फर्स्ट व्हाट यू शुड डू इज दैट फर्स्ट इमेजिन अ क्यूब. एक क्यूब को इमेजिन कर लीजिए ऑफ साइड a. देन इट विल बिकम वेरी इजी. Okay, so this is the cube. अब देखिए ये a by 2 है, ये डिस्टेंस जो है ये तो a by 2 है. यहाँ पे एक चार्ज प्लेस किया है, दिस इज a क्यूब. सो आई नो कि अगर मैं क्लोज सरफेस बना लूँ according to Gauss's theorem, the total flux from a closed surface will be the charge जो इसके अंदर है by the epsilon
This is the total flux coming out through a closed surface according to Gauss's theorem. But they have not given me the closed surface, they have given me only one. That means this is actually the flux coming out from all the 6 surfaces. So किसी एक surface से पूछा है तो by 6. So this is the flux coming out through any one surface. This is the flux coming out through any one surface. Clear? Next, see, electric field is given to you. This is the electric field. This is the x component. This is the y component. And E0 का value भी दे दिया है. Find the flux through a rectangular surface of area. Okay, this is the area given parallel to the YZ plane. अब एक चीज ध्यान देखिए. If it is the x-axis, it is the y-axis, z-axis. तो parallel to the YZ plane, मतलब they are talking about this plane, है ना? तो if they are talking about this plane, इसका मतलब है the electric field along the x-axis should be perpendicular to the surface. तो मुझे फ्लक्स के लिए we know it is E dot ds, मतलब E ds cos theta, and with the plane it is making 0 angle, so E ds cos 0 degree, and cos 0 is 1. That means the flux which we will take will be only of the value of the I component, क्योंकि I component ही है into the area. So the flux will be 3/5 और E0 का वैल्यू दे दिया है 2 into 10 to the power 3 into 0.2. तो फ्लक्स कितना आ रहा है? दिस इज कमिंग 0.4, 1.2 by 5 into 10 to the power 3 means it will come 0.24 into 10 to the power 3. और फ्लक्स का जो है इट इज E into ds. इसका E का वैल्यू क्या है? न्यूटन पर कूलम. दैट मीन्स न्यूटन पर इंटू मीटर स्क्वायर. दिस इज द वैल्यू ऑफ द फ्लक्स. क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, it is saying that electric field का आपका वैल्यू दे दिया है. in the next question they have given the electric field. so यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है. दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओनली अलोंग दिस एक्सिस और ये उल्टा आएगा. ओके, फाइंड द फ्लक्स थ्रू दिस चार्ज एंड द चार्ज. फाइंड द फ्लक्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए फ्लक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए इस फील्ड, इस सरफेस से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा नहीं. सिमिलरली ये वाला जो सरफेस है, इस सरफेस से भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और इस सरफेस से ऐसे है. सो हियर द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स आर 0, तो इसमें लेंगे नहीं. तो टोटल फ्लक्स कमिंग आउट विल बी, देखिए, तो टोटल फ्लक्स कमिंग आउट विल बी, एक तो इस कंपोनेंट के लिए और एक इस कंपोनेंट के लिए आएगा, राइट? एंड सो वी वर टू ऐड इट बेसिकली. तो टोटल फ्लक्स यहाँ से और यहाँ से कितना फ्लक्स आ रहा है, राइट? दैट मीन्स अब अगर मैं फर्स्ट वाला कंपोनेंट दूँ, इसको 1 ले लेता हूँ
और इसको मैं 2 ले लेता हूँ। तो फ्लक्स इज E1 into the area plus E2 into the area. So E1 क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अल्फा, एंड अल्फा इज 800, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, x to the power हाफ। अब देखिए यहां के लिए x कितना है, इट इज गिवन a, और इस सरफेस के लिए x कितना होगा। सो दिस इज, लेट मी राइट इट हियर, x1 to the power half plus this is 800 into, अच्छा यहाँ पे एरिया भी है, x2 to the power half into a square. So 800 into a square तो कॉमन आ गया। x1 क्या है यहाँ पे, a to the power half, एंड x2 क्या है यहाँ पे, 2a to the power half. So 800 a square, और ये कितना आ रहा है देखिए, into this is a to the power half, 2a to the, this is आपका 2 to the power half, a to the power half and a to the power half, that is 2a to the power half. So 800 into 2 to the power half, basically 2 to the power 3 by 2 है, and a to the power, it's, this is a square and this is 5 by 2. So basically 800 और a का वैल्यू कितना दिया है, 1 by 10, 0.1 to the power 5 by 2. So this is the flux, basically this is the flux. Next they are telling what is the charge. So देखिए according to Gauss theorem, flux is equal to the charge enclosed by the epsilon O. तो ये मेरा फ्लक्स है, into epsilon O equal to Q. So epsilon O का वैल्यू कितना है, 8.85 10 to the power 8.85 10 to the power minus 12 into this whole thing. So this will give me the charge in coulombs. This you please calculate it because the data is becoming little bit tough. So इसको आप थोड़ा calculate कर लीजिएगा, and that this you will get the answer of this. So let's move to the next question. The next question says that this is my electric field. देखिए, this is my electric field given for positive, and this is the electric field when x is positive direction electric field और x is in the negative direction, ये मेरा electric field है. Okay, so what is the, they have given everything here. This is a cylinder, नेगेटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, पॉजिटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया है, एंड दिस इज अलोंग आई डायरेक्शन. दैट मीन्स अलोंग द वाई डायरेक्शन देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, दे आर टेलिंग टोटल फ्लक्स. सो फ्लक्स इज व्हाट,
फ्लक्स इट ई डॉट डी एस। सो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये मेरा डी एस है, दिस इज माई डी एस, ये भी मेरा डी एस है। सो ई डी एस कॉस 0 डिग्री लेंगे यहाँ पे, विच इज ई डी एस। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लेंगे, एक पॉजिटिव डायरेक्शन वाला लेंगे, दैट इज 200 into the area will be pi r square, radius given देखिए 5 सेंटीमीटर। ये प्लस यहां से भी लेंगे, that is this is coming minus, but net flux will be added up 200 pi into देखिए नेगेटिव डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, फ्लक्स यहां से कितना निकलेगा, दिस, राइट, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ, so net flux will be twice of this, so 400 pi 25 into 10 to the power minus 4, so this is coming 10,000, 25 4 100, 10,000, तो 10 to the power 4 कट गया, which is coming only pi, 2 pi, this is Newton, Coulomb -1 and meter square. This is the total flux. Okay, next they are telling what is the net flux through the sides of the cylinder. देखिए सिलेंडर यहाँ से फ्लक्स, यहाँ से तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल ही नहीं रहा है, there is no electric field on this side. So flux through the sides of the cylinder will be 0. Next, outward through the cylinder, तो यही होगा, outward flux through the cylinder. And then they are telling net charge on the cylinder. Now we know charge, we know flux Q by epsilon O, तो हमको फ्लक्स पता है, एप्सिलॉन O का वैल्यू भी पता है। एप्सिलॉन O क्या है, लेट्स शो इट हियर। एप्सिलॉन O इज 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू फ्लक्स ये ले लेंगे 2 पाई, सो दैट विल गिव मी द आंसर इन कूलम्ब्स, दैट विल गिव मी द आंसर इन कूलम्ब्स। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे बिकॉज इट इज बिकमिंग टू बिग वीडियो। An infinite line charge produces this much. So electric field due to a line charge at a distance of, तो देखिए this is the line charge, they are telling यहाँ बताइए electric field at a distance of 0.02 meter, यहाँ electric field क्या होगा, it will be outwards. So electric field due to a line charge is how much? It is Q by 4 pi epsilon O into R, Q by 4 pi epsilon O into R. So here sorry, this is the charge per unit, this is the linear charge density. Okay, so हम लोग यहाँ करेंगे, so lambda, they are asking lambda, linear charge density, so E into 4 pi epsilon O into R. चलिए let us calculate, E का वैल्यू दे दिया है 9 into 10 to the power 4 and
4 pi epsilon OR, it is actually 1 by 9 into 10 to the power 9 and R का वैल्यू दे दिया है 0.02, that means 2 by 100. So therefore lambda कितना निकल रहा है, देखिए 9 and 9 will cut, 4 and this is 5, right, 5 और 2 यहाँ पे 7, so 2 into 10 to the power minus 7, this is Coulomb per meter. This is the linear charge density. This is the linear charge density. ठीक है. Next, the electric field is radially outwards and varies. Electric field का ये देखिए दे दिया है, it is outward. Find the charge contained in the sphere of radius. मतलब ये एक sphere है. Electric field is coming out like this. So definitely यहाँ पे एक positive charge है. This is the electric field coming out. Okay. Radius is given to you. We know, find the charge contained in a sphere. We know the charge, electric field due to a charge, वो आपको एक solid, this is a solid, we have to take a solid sphere which is coming as this is, so we know phi equal to E dot ds और phi E का वैल्यू दे दिया है 250 into R, ds है 4 pi r square, so phi equal to 250 into radius, that is 4 pi, it is r cube है ना, r cube, that is 2 by 10 का cube. So find, that is coming how much, 250 into 4000 होता है. Okay, so this is 1000 into 22 by 7, 8 by 1000, so it is coming 178 by 7 आपका न्यूटन कूलम meter square. So now we know phi equal to q by epsilon o. So q क्या होगा, phi into epsilon o, 178 by 7 into 8.85 into 10 to the power minus 12. तो इसका कैलकुलेशन कर देंगे and you will get the coulombs, charge in coulombs, ये आपको मिल जाएगा. Next is, we are having an electron is fired towards a metal plate that has an excess of negative charge with a charge density. So ये आपका charge density is this 2 into 10 to the power minus 6 coulomb per meter square. ये charge density है. For every meter square charge is this. If the initial kinetic energy of the electron, kinetic energy of the electron कितना दे दिया है, 100 electron volt means 100 into 1.6 10 to the power 19, that is 1.6 into 10 to the power 21 joules. Okay, so see, the electron is fired with this energy
and the electron should stop before reaching the plate. तो एक प्लेट की तरफ हमने उसको चार्ज, it has a charge density of this, right? It has a charge density of this. So if the initial kinetic energy electron has, should stop and the electron should stop before the plate, how far from the plate must it be fired? तो देखिए फिगर कैसा है. इसमें नेगेटिव चार्ज है. द इलेक्ट्रॉन इज फायर्ड, वो ऐसे आएगा एंड इट विल स्टॉप एट अ डिस्टेंस एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बिकम जीरो. काइनेटिक एनर्जी यहाँ जो है काइनेटिक, सो दैट मीन्स it has to do total, it has to lose this much of kinetic energy, it has to lose this much of kinetic energy. 1 minute. It has to lose this much of kinetic energy before it stops. So what should be the distance? ठीक है. So see, we have been given the charge density. So we know that the electric field due to a plate is actually sigma by epsilon O. Electric field due to a thin plate is sigma by, the thick plate is sigma by epsilon O. So now the force acting on the electron will be E into E. With this force, it has to cover a distance of x, so this is the work done, and that work done should be the kinetic energy. The loss in kinetic energy is equal to that work done. ठीक है. So electron is minus 1.6 10 to the power minus 19, and E इसका वैल्यू क्या है? 2 into 10 to the power minus 6 by 8.85 into 10 to the power minus 12. इसका वैल्यू बैठा देंगे. Into x is equal to this 1.6 into 10 to the power 19. ठीक है. So let us see here what we can do. So basically sorry, this is a mistake here. 10 to the power minus 19 हो गई है. So this cuts 1.6 cuts. So basically देखिए x यहाँ से निकाल लेंगे, which is coming out to be 8.85 को round of 9 ले लेते हैं. So it will come 9 by 2, that is 4.5 nearly into 10 to the power minus 6 meter. ये आंसर हो जाएगा, राइट. सो इलेक्ट्रॉन हैज टू स्टॉप विद इन दिस मच डिस्टेंस. क्लियर. चलिए नेक्स्ट. ए पार्टिकल ऑफ मास दिस इज गिवन ओवर अ लार्ज हॉरिजॉन्टल शीट ऑफ चार्ज डेंसिटी. दैट मीन्स दिस इज सिग्मा गिवन. व्हाट शुड बी द, सो दैट इट रिलीज डाउन नॉट फॉल, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर. ओके. तो देखिए ये एक प्लेट है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस शीट विल बी sigma by epsilon O, which is 4 into 10 to the power minus 6 by 8.85 minus 12, right. तो which is nearly coming out to be 0 point ऐसा कुछ आएगा. 6 into 10 to the power 6 Newton
Coulomb. And now they are telling here is an electron. So this is the suppose the charge. So charge, its weight is acting down and the force acting up is actually QE. तो because it's not falling, तो ये दोनों बैलेंस होना चाहिए. mg इक्वल टू q इंटू ई. तो 5 इंटू 10 टू द पावर, ये ग्राम्स में है देखिए, तो -9 हो जाएगा kg इंटू 10 ग्रेविटी. q आई डोंट नो, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से मुझे मिल जाएगा 0.6 इंटू 10 टू द पावर 6. दैट मीन्स q मुझे मिल जाएगा 5 by 0.6, it's 50 by 6, that means 25 by 3, that means 8 point something into 10 to the power -8 है, -6, -14 coulombs. Now we know q, n into e, n is the number of electrons. So this is 8 roughly into 10 to the power -14 by 1.6 into 10 to the power -19. तो देखिए 8 by 1.6 कितना आता है, 80 by 16 माने नियरली 5 into 10 to the power 5 इलेक्ट्रॉन्स. ये आंसर हो जाएगा. आई एम डूइंग लिटिल बिट ऑफ रफ कैलकुलेशन, कितनों, क्योंकि इतना ज़्यादा कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल है. नेक्स्ट सी देयर आर 3 चार्जेस ए बी सी प्लेस्ड ऑन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. टी इज द मिड पॉइंट. एनर्जी कितना दे रहे हैं, 1 किलोवाट. एनर्जी इज गिवन एज 1 किलोवाट. दैट मीन्स 1000 जूल्स पर सेकेंड. इसका मतलब ये है इन हाउ मेनी डेज would be required to move the charge A to D. A को यहां से D में लाएंगे, right? So basically I have to find out what is the potential at A due to B. So it is Q by 4 pi epsilon O into R, which is 0.1 into 10 to the power, this is Coulomb given, okay, so no 10 to the power, by अच्छा 1 by 4 pi epsilon O, इसका वैल्यू, let's do the calculation properly. So 1 by 4 pi epsilon O कितना होता है, 9 into 10 to the power 9. चार्ज कितना दिया है, 0.1, एंड डिस्टेंस कितना दिया है, 1. That means it is 9 into 10 to the power 8 volts. Similarly, charge due to at A due to C क्या आएगा, सेम ही आएगा, volts. Similarly, charge due to at D due to B. देखिए ए पे चार्ज किसका आएगा, बी का आएगा और सी का आएगा. डी पे चार्ज किसका आएगा, बी का आएगा, सी का आएगा. सो इट विल बी अगेन क्यू बाई, सो 9 इंटू 10 टू 9. चार्ज इज अगेन 0.1, बट हियर डिस्टेंस इज 1/2, हाफ. कितना आ रहा है, इट इज 18 इंटू 10 टू द पावर 8 volts. Similarly, potential at D due to C सेम आएगा, 18 into 10 to the power 8 volts. Therefore, net potential at A net कितना आएगा, इसको और इसको ऐड करेंगे, that is
18 into 10 to the power 8 volts and net potential at D, इसको और इसको ऐड करेंगे, that is 36. Therefore potential difference between A and D कितना आ रहा है, this minus this, which will come 18 into 10 to the power 8 volts, right? Therefore work done. थोड़ा सा मैं यहाँ पे जगह क्लियर कर लेता हूँ. Let me clear out some space. So that it becomes easy for me to calculate. चलिए ठीक है. Okay. So see here. Basically we found the net potential at A and the net potential at D, and then we found the net potential difference. तो अब क्या करेंगे, potential difference, so work done. So we'll find the work done. Will be the potential difference into we have to move the charge which is at we have to find 1 minute at B at C, and we have to find the potential at, अच्छा one thing we forgot, net A तो ठीक है, but we have to find the potential at D due to ABC. ये थोड़ा गलती हुआ है. So let's see, we have to find the potential at B due to ABC. Okay, so this is not D net, this is the potential at D due to see the calculation still here is okay only, but एक चीज खाली लिखना पड़ेगा. At D पोटेंशियल इसके लिए आएगा, इसके लिए आएगा और इसके लिए भी आएगा, बट एट A पोटेंशियल B के लिए आएगा एंड पोटेंशियल C के लिए आएगा. ओके, सो B एंड C के लिए तो कर दिया है, बट एट D B एंड C के लिए हुआ है, बट ड्यू टू A वी हैव नॉट डन. अब देखिए A इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट कितना होगा, हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज √3/2 into the side, which is 1. So √3/2. So this is √3/2. Yeah. So now if I calculate, that is, what is the potential at D due to A? Potential at D due to A. तो हम क्या करेंगे, अगेन 9 into 10 to the power 9. चार्ज कितना है 0.1 बाई द डिस्टेंस √3/2, सो ये √3 एंड 2 ऊपर जाएगा, सो VDA, सो इट्स कमिंग 1.8 एंड 1.73, इट्स नियरली 1, तो नियरली 1 आएगा. सो 10 to the power 9 आ रहा है, मीन्स आई कैन राइट 1 into 10 to the power, आई कैन राइट 10 into 10 to the power 8. देखिए कैलकुलेशंस थोड़ा सा रफली मैं ले रहा हूँ बिकॉज इट इज बिकमिंग टाइम कंज्यूमिंग. सो सी हियर, this is √3. Okay, so 9 into 2 is 18, right? 18/3, 1.73 is nearly coming as 10, nearly coming as 10. So 10 into 8 to the power 10 to the power 8, so it is 10 into 10 to the power 8 volts. So now D net, अब D net क्या होगा, इसके साथ ये थोड़ा ऐड हो जाएगा, 10 into 10 to the power 8, which is coming 46 into 10 to the power 8
volts. And now we will find the potential difference. ठीक है. Now we are going to find the potential difference. तो देखिए, so potential difference due to B and A will be, ये है 46 minus 18 into 10 to the power 8. So it's coming 28 into 10 to the power 8 volts. Okay, so work done will be the charge into the potential difference. So we are moving how much charge? 0.1. So 0.1 into 28 into 10 to the power 8. So which is coming 2.8 into 10 to the power 8 joules, right? अब यहाँ पे एक चीज देखिए. So let's remove this. So please watch one thing, that is, here they are telling that I am supplying 1000 joules per second. 1000 joules per second. तो इतने जूल्स के लिए कितना हमको टाइम चाहिए? So see, it will be 2.8 into 10 to the power 6 by 10 to the power 1000 means 10 to the power 3. So it is 2.8 into 10 to the power 3 seconds, which is, if I divide by, so it is 2, अगर डेज में कन्वर्ट करें 2.8 into 10 to the power 3, 1 day is 3600. 1 day is coming how much? It is 24 into 24 hours, and 1 hour means 3600 seconds. So 3.6 into 10 to the power 3, ये कटेगा. Okay, so we'll calculate this. 2.8 by 24 into 3.6, ये कैलकुलेशन कर लेंगे, उतना डेज आएगा. प्लीज चेक दैट, थोड़ा चेक कर लीजिए कैलकुलेशंस. एंड लेट्स सी द लास्ट सम. एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये डाइपोल आपको दिख रहा है, चार्ज दिख रहा है, सेपरेटेड बाय 2 मिलीमीटर दिख रहा है, प्लेस नियर अ लॉन्ग लाइन, ओके, शीट. चार्ज, लीनियर चार्ज डेंसिटी दिख रहा है, मतलब लैम्डा. दिस इज गिवन लैम्डा. ओके, माइनस चार्ज इसकी तरफ फेस करके है. कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल. तो देखिए, इधर फोर्स होगा F1 अट्रैक्टिव, एंड इधर फोर्स होगा F2 रिपल्सिव. सो F1 क्या है? QE. एंड व्हाट इज द E? मुझे E लेना है पहले. इट इज लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन OR. सो लैम्डा दे दिया है, दैट इज 4 into 10 to the power 4 by 1 by 4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू क्या है? 9 into 10 to the power 9 into 1 by R. R का वैल्यू दिया है, देखिए 2 सेंटीमीटर. सो 2 into 10 to the power minus 2. सो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इट इज कमिंग, ये 2 कटेगा, दैट मीन्स 18 into 10 to the power, दिस इज 13, और ये आएगा 15 न्यूटन into कोलम.
नेक्स्ट व्हाट इज E2, इसका भी वही आएगा, लैम्डा क्या है 4 इंटू 10 टू द पावर 4, फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन कितना है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 बाई, अब R क्या है यहाँ पे, R इज 4 मिलीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 2 मिलीमीटर। देखिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज 2 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर है एंड दिस इज मिलीमीटर। तो मिलीमीटर टू सेंटीमीटर इज 0.2, दैट मीन्स 2.02 into 10 to the power -2। So E2 क्या होगा, दिस विल कम नियरली 18 से थोड़ा कम आएगा, 18 से थोड़ा सा कम आएगा, दैट मीन्स इट विल कम नियरली लेट्स से 17 into 10 to the power 15 Newton Coulomb। Okay, so the force acting on the dipole, first on this charge, first charge is how much, 2 into 10 to the power -8 into E का वैल्यू लगा देते हैं 18 into 10 to the power 15, which is 36 into 10 to the power 7 न्यूटन। सिमिलरली F2 का वैल्यू क्या होगा, 2 इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू 17 इंटू 10 टू द पावर इंटू +15, 34 इंटू 10 टू द पावर 7 न्यूटन। देयरफॉर नेट फोर्स क्या होगा, F1 माइनस F2। ओके, सो इट इज, ये रहा F1 एंड दिस इज F2, सो इट इज 2 इंटू 10 टू द पावर 7 न्यूटन। दिस इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल, राइट। So friends, we have covered up a lot in this section, that is electric potential में अगर आप देखें I have covered up a lot of the syllabus, और इसमें बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स मैंने डिस्कस किया है आपके साथ, बहुत ही अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स वी हैव डिस्कस्ड। सो आई वुड सजेस्ट कि आप अगर इनको देखें ठीक से, इफ़ यू फॉलो माई लेक्चर्स वेरी वेरी नाइसली, तो क्या होगा कि यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ दिस चैप्टर अबाउट, और इन चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करेंगे। द कंप्लीट थ्योरी ऑफ दिस चैप्टर इज़ प्रोवाइडेड टू यू, प्लीज़ गो थ्रू इट। इस वीडियो को बार बार देखिए। ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हाट कैन कम हैज़ बीन कवर्ड अप इन द सिलेबस, और इतना बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स मैंने डिस्कस किया है कि इफ़ यू फॉलो द न्यूमेरिकल्स पार्ट आपको बहुत ईजी से समझ में आ जाएगा, राइट। इफ़ यू हैव स्टिल एनी प्रॉब्लम, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट डाल दीजिए, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट, राइट। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड आई वुड सजेस्ट प्लीज़ लाइक, शेयर and subscribe my channel Parijat sir classes. Please keep watching Parijat sir classes. एंड इनको फॉलो करते रहिए, बिकॉज आई एम अपलोडिंग, एक के बाद एक वीडियो में अपलोड करूंगा, सो दैट इट गिव्स यू अ बेनिफिट टू यू, ठीक है। इसके आगे भी 2 वीडियोस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डाला हुआ है, उनको भी देखिए, इसको देखिए, आगे भी और मैं वीडियोस में लाऊंगा। प्लीज़ कीप वाचिंग, ठीक है। अंटिल देन प्लीज़, जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए आप, ओके। सो टिल देन इट्स गुड बाय फ्रॉम माई साइड, थैंक यू एंड बाय बाय।